Hi everybody, welcome back. I'm Disha and I'm here to help you transform your house into a home. And today I have a very special guest on my channel all the way from Bhopal. Everybody, introducing my younger sister Shikha to you all. And she's gonna tell you the story of transformation that she has done recently. Over to her now. हाय एवरीवन, आई एम शिखा और मैं भोपाल में रहती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने अपनी पोर्च की वॉल का मेकओवर किया। मैं और मेरे हस्बैंड कुछ समय के लिए घर से बाहर गए हुए थे। जब हम लोग लौटे तो मैंने देखा कि हमारे पोर्च की जो वॉल है उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है। धूप, बारिश की वजह से उसमें काफ़ी क्रैक्स आ गए थे, मोल्ड्स भी ग्रो होने लगी थी। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं इसका मेकओवर करूँगी। जैसे कि दिशा दीदी अपने वीडियोस में बताती हैं कि हमें सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, तो मैंने डिसाइड किया कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये मैं खुद से करूँगी। और थोड़ा सा इंटरनेट एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। मेरे माइंड में जो है आइडियाज़ आने लगे और धीरे धीरे मैंने इसके लिए सामान जुटाना शुरू किया और जुट गई इस वॉल की ट्रांसफॉर्मेशन में। So she put her creative hat on and began the transformation with great enthusiasm and energy. Also, would you believe if I tell you that the entire makeover has costed her just 700 bucks? Let's check out. The first step was to scrape away mold spots and make the wall surface even. For this, she sanded the wall and wiped it. It's all clean and even now. जब ये आइडिया मेरे दिमाग में आया था तब लगा तो था मुझे कि ये काफ़ी आसान होगा, पर जब मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, शुरू किया, तब रियलाइज़ किया कि ये इतना आसान भी नहीं है। Next, she filled all the cracks and chipped part of the wall with slurry and cement. She then let it dry for 24 hours. मैं चाहती थी कि घर में एंटर होते ही पीसफुल वाइब्स मिलें, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर एक बुद्धा फेस बनाऊंगी। To sculpt the Buddha face on the wall, it was important to have a nice and even background. So she plastered the wall with wall putty. It took her another day to finish this step, and after one coat she went ahead for the second coat and let it dry. Once it was dry, she then sanded it lightly and drew the Buddha face that she wanted to sculpt. She mixed 1 part of white glue with 3 part of putty and a little bit of water to make the sculpting clay. And then began the hardest part of the project,
sculpting the calming face of Buddha. मैंने बुद्ध भगवान के चेहरे को 4-5 बार बनाया और बिगाड़ा, और मैं ये तब तक करती गई जब तक मुझे लगा कि हाँ, अब बुद्ध भगवान का जो चेहरा है वो शांतिदायक है, जैसा कि मैं चाहती थी। और तब मैं नेक्स्ट स्टेप पर मूव ऑन हुई। She kept sculpting the Buddha face until she got all the facial features right, from this to this. Can you imagine how hard it can be for someone who's sculpting for the first time? She made clever use of the things that were lying around and used them as sculpting tools. चेहरे से संतुष्टि होने के बाद का जो काम था वो काफ़ी आसान था। मैंने फटाफट से बेल्स बनाई, पेंट किया और लास्ट में मैंने स्टाइलिंग का काम किया, जिसमें मैंने प्लांट्स रखे, नीचे कारपेट डाला जिससे ग्रीनरी का इल्यूजन हो सके। She used amazing tricks to sculpt the bells and chains.
was really amazing to see all the steps involved in the sculpting of serene and beautiful face of Buddha on the wall. And here's the final result. तो ये मेरा सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट था और रिजल्ट्स मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे। अब आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। जब भी घर में अब मैं एंटर होती हूँ तो मुझे काफ़ी पीसफुल सा फील होता है, और जब मैं घर में होती हूँ तब मैं निकल कर कभी कभी देख लेती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि ये सब कुछ जो हुआ है वो सब कुछ मैंने अपने हाथ से किया है। So she is quite happy with the results and cannot stop smiling, and I am even more happy than her, and we both are looking forward to receiving your genuine feedback. So leave the comment below, and that's all for today. I'll see you soon in my next video. Till then, watch either this video or this. Bye bye. Wish you all love, luck and sunshine.